Golmaal 3, I was supposed to play Mithun Dada's role. Oh, but because really? of date problem and all that, I could not do that. How interesting. Yeah. Poetic justice. Yes. This is much more meaty. Yeah. Golmaal had all kinds of little tracks running yeah, around. yeah. This was a small track. Frankly, young love stories, what new angles are you going to come out with? Every angle has been Covered. exposed and done to death. Yeah. अभी कुछ नया सोचना पड़ेगा तो अब बुढ़ाऊ की कहानी है सोचो. OTT के आने की वजह से बड़ा फायदा ये हुआ है कि द सो कॉल्ड स्टार सिस्टम उसको काफी धक्का पहुंचा है. अभी पंकज त्रिपाठी साहब भी उतने ही बड़े स्टार है, दिव्येंदु भी उतना ही बड़ा स्टार है, जयदेव अहलावत भी उतना ही बड़ा स्टार है. तो सिर्फ पैसों के लिए कहता हूँ, मैं तो 90% ऑफ द फिल्म पैसों के लिए ही की थी. क्योंकि क्या होता है कभी कभार वो फिल्में भी आपको अलग फिल्म करने के लिए उसका सहारा मिलता है. वरना हम लोग साउथ इंडियन फिल्में चोरी करते थे या नॉर्थ इंडियन पूरा माहौल बना देते थे. एज इफ ऑल ऑफ इंडिया इज जस्ट दैट. पंजाबी बोलने वाले, भांगड़ा करने वाले, करवा चौथ रखने वाले, पूरा देश तो ऐसा नहीं है ना. Hi guys, this is Himesh and welcome to Pinkvilla. Today we have with us two very special guests, Paresh Rawal sir and Ratna Pathak ma'am. Welcome to Pinkvilla sir and ma'am. It's Thank you. absolute pleasure having you here. So my first question to both of you is, very rarely do we see, a well-sketched love story for senior characters. And how did you first react when this script came your way? It's a proper love story that's actually running in the backdrop. That's right. That's interesting. That was one of the reasons why I decided to do the film, for sure. The other being that Paresh would be in it. And I guess there's enough seniors in the audience now, so now we have to make something for them also, na? Finally, we are coming into our own. And Paresh, how did you first react when you heard this concept? Normally our love stories are whether it is for young people or it is not even matured. And this year getting a love story for the matured people. And turned out to be fortunately good. So, and we had a ma'am in the cast, so it was going to be, I knew it's going to be a very beautiful journey. And the track of the two of you reminds me of, when I watched the trailer first, it reminds me of your and Mithun sir's track from Golmaal 3. It had a, there is that naughtiness. Right. Yes. So could you elaborate something on, did that not come in your mind, and could you elaborate something on the track? No, I didn't remember that one. That was a completely different kind of film, and the mood was so totally I'll tell different. you one thing. In Golmaal 3, I was supposed to play Mithun Dada's role. Oh, but because really? of date problem and all that, I could not do that. How interesting. Yeah. Poetic justice. Yes. This is much more meaty. Golmaal had all kinds of little tracks running around. This was a small track. But I do remember feeling that that's an interesting track to have an older relationship which comes to fruition. Similarly, in this one, True. It's interesting to see old people in this situation, elder people. I refuse to call myself old, but older people in this kind of a situation. Frankly, young love stories, what new angles are you going to come out with? Every angle has been Covered. exposed and done to death. Yeah. अभी कुछ नया सोचना पड़ेगा तो अब बुढ़ाऊ की कहानी है सोचो. And the film is coming on Diwali. It's a comedy. Do you think that's the best genre for a Diwali release? For a good film, whether it is Diwali or any Diwali wala, I think it works. For a good film. But अभी लॉकडाउन के बाद एक फेस्टिवल का पीरियड आता है तो लोगों का मूड भी थोड़ा ब्राइटन अप होता है, अपबीट होता है, तो ये अच्छी फिल्म है उनके लिए. Yes, definitely. And बहुत लोगों ने बहुत मुश्किलें झेली हैं इस पिछले 2 सालों में. बहुत लोगों के घर उजड़ गए हैं लिटरली. एंड बाकी लोगों को इन एवरी वन ऑफ अस हैज हैड ह्यूज इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स फ्रॉम बीइंग शट डाउन इन आवर होम्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. Yeah. So definitely I'm hoping, I haven't seen the film, but I'm hoping that it'll be the kind of film that cheers you up. We are desperately in need of cheer. True. And there is Rajkumar Rao and Kriti Sanon in Yes. the film. Could you share some anecdotes from the set? How was it working with them? Because in the trailer, you all are having a blast. So I'm sure off screen also there must have been. तो मजा आता है जब किसी से कंपटीशन हुई तो सब अपने आप सिक्योर्ड होते हैं, सब एक्टर. वो मजा ही कुछ और होता है. बिल्कुल, I agree entirely. एंड रिस्पेक्ट होता है, वो मजा ही कुछ और होता है. Correct. Yeah, that's of course. And I think that also reflects on the screen when
the chemistry comes together. So Very true. And what you see on the screen is not what we experience off screen, you know. Our job is not to entertain ourselves. Our job is to entertain you who are viewing. The business of making something work is hard. It's not fun. I mean, it's fun in the way he's talking about it, Yeah. which is that you really get pleasure out of doing something well. True. But it's not ha ha he he kind of fun. yeah, It's hard work. You work Yeah. 12 hours a day and it can get very tiring, and you can have bad tempers and you can have fatigue and all kinds of things. So our experience is quite different from the experience of the viewer. viewers. Yeah, true. And so, you both have been a part of this industry for 4 decades now, almost 4 decades. How have you seen the industry evolve over the years, now with OTT also coming up in a big way, where even Do Hamare Do is premiering? OTT के आने की वजह से बड़ा फायदा ये हुआ है कि द सो कॉल्ड स्टार सिस्टम उसको काफ़ी धक्का पहुंचा है। अभी पंकज त्रिपाठी साहब भी उतने ही बड़े स्टार है, दिव्येंदु भी उतना ही बड़ा स्टार है, जयदेव अहलावत भी उतना ही बड़ा स्टार है जितने बाकी के स्टार हैं। तो उनका अपना एक मकाम बन गया है। करेक्ट। तो बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ा स्टार स्टोरी है, राइटिंग है। हम तो तरस गए थे कि हम अपनी जिंदगी में ये दिन देख पाएंगे कि नहीं। मैं तो डेफिनेटली तरस गई थी क्योंकि द राइटिंग वाज सो शैबी इन आवर फिल्म्स एंड सच पुअर क्वालिटी वर्क made so much money. It was embarrassing. Now I'm truly happy that we have bumped up our skills in all departments. Correct. So basically it has given rise to a parallel star system which exists along with the नहीं, बाकी OTT हुआ था क्या कि since 2005 अनुराग कश्यप वगैरह कब है 2005 में 2005 was his first one. 5 से जो शुरू हो गया था नए राइटर नए डायरेक्टर, उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ, वहां से तो शुरू हो गया था। दूसरी सबसे अच्छी बात ये हुई है जो फॉरेन फिल्म जो कंपनीज थी उनकी ऑफिस जो यहाँ पे खुल गई है, जो लीगली जो बाद में आपके यहाँ लिस्टिंग होती है, अगर आपने उनकी कहानी चोरी की है तो दिस इज अ वर्च्यू आउट ऑफ हेल्पलेस, हम अपनी कहानियां लेकर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है। ट्रू, या बहुत साल चोरी करके हम लोगों ने काम चलाया। Absolutely. And so, ma'am, Abhishek comes from the Gujarati cinema background, and how does it feel to see it doesn't happen often. How does it feel to see a Gujarati director coming to Bollywood and making a mainstream commercial film? But you look at the script, you don't look at where he's coming from. Look at the script. फिर वो भले ही आसाम से आया हो कि नेपाल से आया हो, कोई लेना देना नहीं है, कहानी अच्छी है उसकी, उसको काम आते, that's it. Correct. Absolutely. Okay. And that's one of the benefits of the kind of storytelling that we are seeing today. That people from all over the country, not just from some few pockets. वरना हम लोग साउथ इंडियन फिल्में चोरी करते थे या नॉर्थ इंडियन पूरा माहौल बना देते थे, as if all of India is just that. पंजाबी बोलने वाले, भांगड़ा करने वाले, करवा चौथ रखने वाले, पूरा देश तो ऐसा नहीं है ना। तो ये अलग अलग पार्ट्स की जो कहानियां आज सबके सामने आ रही हैं, I think it's a great step forward. I mean, look at our country, look at the variety of our country. No other place in the world has what we can offer in terms of location, in terms of ideas, in terms of ways of living, language, everything, actors. हर जगह से हम लोग कहानी ला सकते हैं। शुक्र है अभी फाइनली आने लगी वो कहानियां। Yeah, different stories. And I think even that has got to do with OTT, that people are exposed to content from all languages. Like we see people discussing Malayalam, Telugu, Gujarati, all kinds. And what wonderful films we have seen in the last few years from all parts of the country. True. मतलब गुजराती फिल्में तो इतनी खराब थी, मेरी माँ एक्ट करती थी ना गुजराती फिल्मों में, हम तो कहते थे आपकी पागड़ा चाप फिल्म देखनी ही नहीं हमको कभी। लेकिन आज खुशी खुशी मैं हेल्लारो टाइप की फिल्म देखूंगी या बेयार जैसी फिल्म देखूंगी। Yeah, that's true. But ma'am, are you looking to get into Gujarati cinema? Of course, I'm willing to get into any cinema. Why should I select on the basis? I mean, if I can speak the language, I don't think I can speak any of the South Indian languages, though I would love to try. But गुजराती तो मेरी मातृभाषा है, तो मैं जरूर गुजराती फिल्म करना चाहूँगी। Correct. There must have been many offers. Not so many, surprisingly, but hopefully I'll do one. तो ऑलरेडी एक करके आया। Dear Father. Yes, of course. You are getting back after 40 years in Gujarati. How exciting is that? It's very exciting क्योंकि क्या है कि एक तो
अपनी मातृभाषा में काम करना, मजा ही और है। और वो लिमिटेड इकोनॉमी आपको परमिट करती है, अलाउ करती है, जो सब्जेक्ट आप करना चाहते हो उसे आप कर सकते हो। तो मुझे वो बड़ा मजा आया, और मुझे लगा कि जैसे मैंने ड्रामा की टूर की है 1 महीने की, और मैं बिल्कुल करना चाहूँगा एवरी ईयर 1 फिल्म तो मैं एटलीस्ट करना चाहूँगा, अलग अलग किस्म की। Okay. Yeah. Okay. And sir and ma'am, what keeps you driving as an actor after having acted in so many films? What keeps you driving, and what are the factors that the two of you look into the scripts in this phase of your career? अभी तो आसान है क्योंकि अभी तो अच्छा काम आ रहा है, बिल्कुल। तो अभी तो और भूख लगी है। हाँ, बिल्कुल। पहले जो उब गए थे जो सिर्फ पैसों के लिए के, तो मैं तो 90% ऑफ द फिल्म पैसों के लिए ही की थी, क्योंकि क्या होता है कभी कभार वो फिल्में भी आपको अलग फिल्म करने के लिए उसका सहारा मिलता है। अगर सिर्फ सरदार पटेल करते रहे और या रोड टू संगम करते रहे तो फिर उतना पैसा नहीं आना जितनी ये फिल्में देते, उनकी वजह से हम ये कर सकते हैं। Correct. और आपकी ऑडियंस भी ट्रांसफर होती है। जो ऑडियंस परेश को एक तरह की फिल्म में देखती है, वो अगर दूसरी तरह की फिल्म में परेश का नाम देखेगी तो वो अरे वो है, वो एक्टर है, चलो देखें। Yeah. तो डेफिनेटली वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता रहता है। Yeah. At the moment, what is really heartening and which makes you feel very confident and hopeful about the future is that there's a lot of new young writers and young directors in the picture, and I hope they get a chance to keep pushing their boundaries. एक अच्छी फिल्म कोई भी बना सकता है, और बहुत लोग बनाते भी हैं। दूसरी फिल्म कैसी बनी आपकी, बात वहाँ से शुरू होती है। Correct. सो अब हम तो वी हैव डन दिस मेनी टाइम्स। हिंदुस्तान में हम लोग बहुत केपेबल है। स्नैच डिफीट आउट ऑफ द जॉज ऑफ विक्ट्री हम बार बार करते हैं, क्रिकेट में तो ऑल द टाइम करते हैं हम लोग, है ना। लेकिन ये हम लोग आर्टिस्टिक वर्ल्ड में भी करते रहते हैं बार बार, कि एक लेवल से आगे बढ़ने के बजाय उससे पतन होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज समथिंग दैट दीज यंग पीपल हैव टू लुक आउट फॉर। So, like, be it हम दो हमारे दो or the subjects going forward, what are the factors that excites you the most right now in terms of The script, scripts? always the script. Okay. That's always been the story. Is this script saying something that's different? Yeah. Is this saying something that I feel like saying? कभी कभी आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है जो you feel कि मैं अगर फिल्म बनाती तो ऐसी बनाती, ये मेरी कहानी, मैं इस तरह की कहानी कहना चाहती। So that's wonderful. ऐसी अगर फिल्म मिले तो definitely one would want to be part of it. Sometimes your role may not be so great, but the film itself is saying something that you want to stand with. I'm happy to do that kind of work always. Correct. But have there been any films which, looking back, you look back to that film and you feel this had the potential to be very good, but maybe somewhere we went wrong. It looked very exciting on paper. मैंने फिल्म से, लेकिन अब बोल के क्या फायदा है, बिकॉज देन वो खाम खा मैंने काफ़ी फिल्में होती है एट द आउटसेट बड़ा अच्छा दिखता है, 2, 3, 4, 5 दिन के बाद पता चलता है ये गड़बड़ हो रही है, एंड यू कैन बैक आउट एज एन एक्टर बिकॉज आप तो बड़ा छोटा सा पुर्जा है आप। Correct. You can't do anything. Correct. And so, talking about the pandemic times, this is a comedy film which is coming. Do you think comedy as a genre is going to flourish going forward because of all the hardships that people have seen? Like message bhi dena hai, like this film has a message about adoption and all those factors as well. वो अगर एक humor के साथ if we are giving it away, it makes a major difference. ह्यूमर से आसानी हो जाती है, बट ह्यूमर भी बड़ी डाइसी माने डिसेप्टिव चीज़ है। ह्यूमर के नाम पे कुछ भी चला लोगे तो मर जाओगे। फिर हम देख रहे हैं किस किस्म की ह्यूमर होती है, बड़ा नाजुक मामला है वो, बिल्कुल टूटे हुए कांच के ऊपर चलने जैसा मामला है वो। और ह्यूमर लिखना बहुत मुश्किल है। सब डायरेक्टर्स एंड सब राइटर्स को समझ में नहीं आता हाउ टू हैंडल इट। क्रूड होना बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाता है, तो इट्स अ वेरी थिन लाइन दैट यू हैव टू कीप बिटवीन getting it right and going over the top. So yeah, it's a tricky thing, and everyone does want to use humor, but how well they do it? Yeah, it's a powerful tool basically. It is. So, but do you as an actor have inputs to the script when it comes to comedy, because you have been a part of multiple comedies in the past which have been cult, be it Sarabhai versus Sarabhai or films, also you have been a part of so many films which have got a cult status. So are there inputs from your end when a script comes your way कि मेरे हिसाब से ये
सी कभी कभी क्या होता है कि हर एक्टर इनपुट देना चाहता है, सैंक्शन करना डायरेक्टर के ऊपर है, डायरेक्टर कितना समझा है, डायरेक्टर कितना अलाउ करता है। कभी कभी अच्छी अच्छी बात नहीं पता नहीं चलती है डायरेक्टर को। और दूसरा टोन डाउन करना कॉमेडी के अंदर या उसका प्रोपोर्शन में करना, ये जो बैलेंसिंग जो है वो भी अंदर उसके लिए बहुत ज़्यादा गहरी समझ चाहिए। हाँ, True, yeah. it's a director's medium. Film definitely is a director's medium. And therefore, you may give your suggestions, but you cannot insist. That's what I believe. That finally, it's the director who has the whole picture in her head or his head. I'm only a small purza in that big machine. So, and yet, comedy requires interaction. It requires a bunch of actors to throw things off each other. Yeah. So that happens. And if a director is more or less sensible and confident, then you do get by. Very few directors are silly enough to say कि ये नहीं अच्छा when it is obviously अच्छा. And Paresh, sir, you have acted in all sorts of comedy, right from a Priyadarshan world of comedy where, you know, the scenes are actually, you get to know the scene on the set. This is what multiple people have said. Two comedies which have, you know, everything on the paper. Which one for you is easier world in terms of getting the comic timing right? माने जो स्क्रिप्ट में है वो, हाँ, versus maybe a Priyadarshan or a David Dhawan world जो set पे improvise होके सब. बट इम्प्रोवाइजेशन के अंदर भी मैं बोलता हूँ एक्टर्स फिर ओवरबोर्ड भी चले जाते हैं, एक्टर को पता भी नहीं होता मैं कितना ज़्यादा कर गया कम कर गया, क्रास काम किया कि क्लास काम किया, एक्टर को कभी कभी पता नहीं चलता है। वो संभालना डायरेक्टर को है कि भैया इसके पर काटो नहीं तो ये उड़न खटोला हो गया है। वो पर काटने का काम डायरेक्टर का है, ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ डायरेक्टर ऐसे भी तो परेश को लिया है ना कुछ भी कर लेगा, अभी ये जो कुछ भी कर लेगा ना वो थका देता है आपको। So how would you define the humor of हम दो हमारे दो, the both of you? ऐसा फाइन, माने ओवरबोर्ड नहीं है रिलेटेबल है और जिंदगी से उभरती हुई Yeah. सिचुएशंस लग रही हैं। हमने फिल्म देखी नहीं है तो इसलिए अभी कॉन्फिडेंस से हम लोग जो कर चुके हैं उसी के आधार पे कह रहे हैं। बट आई मीन आई हैव सीन दैट हैपन सो मेनी टाइम्स कि जो आपने स्क्रिप्ट पे देखा, जो आपने सेट पे किया, जब आप फाइनल फिल्म देखते हैं तो उसमें कुछ और मज़ा आता है, कभी कभी दुख भी होता है, मगर दिस वन आई एम होपिंग विल हैव वर्कड. It looks like it has. True. The trailer suggests that it's a fun family. Pleasant है. Yeah. Yes. Like मजा आपसे जो है. That's मजा the आपसे. kind of, that's how my mom and dad reacted. So That's right. That's right. So Yeah, definitely. ये है फैमिली वाली है. yeah. Correct. And last question, sir, what next for both of you after हम दो हमारे दो in terms of lineup? Like what are the films in the pipeline? अभी कर रहे हैं हम रोहित धवन की शहजादे, and the one I'll be doing with नसीर भाई, सत्यजीत रे साहब की कहानी पे है, आनंद महादेवन डायरेक्टिंग. वन इज पोस्तो बंगाली, उसमें भी मेरे ख्याल नसीर भाई है. That's right. तो 2-3 है और एक मैं गुजराती करने वाला हूँ मंथ ऑफ मई और जून में, बड़ी टेढ़ी कहानी है वो. Okay. So that would be another Gujarati film after Dear Father. Okay. I don't have such a long lineup. I'm going to be doing a Gujarati film hopefully in January. Yes, set in Kutch. So that hopefully will work out. And I think Atish and JD are planning another program for something, OTT kind of thing. Abhi baatein chal rahi hain. Hopefully that will come through. I don't have any film work otherwise lined up in Hindi. Okay. There's, I don't know, online it said there's Jayesh Bhai Jordar also. जयेश भाई जोरदार तो हो चुके हैं, मतलब शूट कर चुके हैं. पता है कब से वो बेचारा वो पेंडेमिक में फंस गए. It's been ready for a while. दिव्यांग ना. Divyang. That's another first-time director. So I'm really looking forward to that. That was fun to do. And a couple of other films that I have done, which hopefully will be released now. And there's Trial by Fire, a web series on the Upar tragedy in Delhi, where there was a fire and 60 odd people died in that. So I'm acting in that one also. That's very powerful. So, yep, looking forward to all these. And lastly, before signing off, last words on हम दो हमारे दो. What the film?
फैमिली एंटरटेनर, क्लीन, मज़ा आएगा। और क्या, कुछ नया सोचना पड़ेगा बोलने के लिए। बहुत दिनों के बाद ऐसा दिमाग साइड पे रख के बस मज़े लेकर के फैमिली के साथ गप्पे मारते हुए, चाय पीते हुए फिल्म देखने वाली फिल्म ये है। आपके घरों में पहुंच रही है तो ज़रूर आगे देखिएगा। Yeah. Perfect. Thank you so much, sir and ma'am. It was lovely talking to you and looking forward to the film. Thank you, Himesh. Thank you. Hi, this is Paresh Rawal. हेलो, रत्ना पाठक शाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब पिंकविला। पिंकविला, रिमेंबर।